Yesterday, today we will discuss the numerical portion of cash book. First of all, it is very important to read the numerical, right? Enter the following transactions in the Vivek Roy's single column cash book. We will solve the first numerical on the basis of single column cash book. We have to prepare only one column for the amount in the books of Vivek Roy's. In books of Vivek Roy, we will prepare cash book. Now we will read the transaction one by one, and I will explain all the transaction to you so that you will be able to pass the journal entry in the cash book, right? 2017 March 1, balance of cash in hand 82,000. This is the opening balance of the month. It means this is two balance brought down. Second, March 5, goods purchased. Good purchase, here it is not mentioned the name of the supplier. Nothing is mentioned about the cash. It means it is considered that it is a cash transaction. We will record this. March 10, goods purchased from Ganesh. Here the name of the supplier is mentioned. So this is a credit transaction. We will not record this transaction in the cash book, as you are already aware about that. In the cash book only the cash transaction will be recorded. March 15, goods purchased from Lakshmi for cash, in cash. अगर आप कैश के लिए परचेज कर रहे हैं, it means this transaction will also be recorded in the cash book. Goods sold for cash, yes, it will be recorded. Goods sold to Saraswati for 36,000. Again, the name of the supplier is mentioned here. It means this is the credit transaction. We will not record this transaction in the cash book. Goods sold to Dev in cash. It will also recorded in the cash book. Received from Saraswati, yes, recorded. Salary to office clerk, yes, recorded. Paid office rent, yes, we will record this transaction. Now, we will discuss the solution part for this numerical statement. Pay your attention here. In the books of Vivek Roy, we are preparing the cash book. In the cash book, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have to draw 10 columns. How many columns we have to draw? We have to draw 10 columns, and these 10 columns, 5 on debit side and 5 on credit side. You know, there are two sides of the cash book, debit and credit side. Debit side, that is the receipt. जो आप रिसीव करोगे डेबिट में, and credit side payments. Receipt means plus, payment means minus. Got my point? So March 2017, 1st March, two balance brought down 82,000. That is the opening balance of the month. Goods purchased. आप जब goods purchase करोगे, cash comes in, cash will go out. Purchases करते हो तो payment करते हो या payment receive करते हो आप? Pay करते हो या receive करते हो? Tell me. Purchases करते हो तो payment pay करनी पड़ती है बेटे, क्योंकि आप स्टॉक ले रहे हो, आप गुड्स ले रहे हो. गुड्स आपके पास कैसे आएंगी? जब आप पेमेंट पे करोगे. तो परचेजेस, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस 20,000. वी विल मेंशन द डेट March 5 here, and the 5 column date, particular voucher number, ledger folio amount, date, particular voucher folio, ledger number, amount. In the previous lecture, we already discussed about the format of cash book, so I will not explain again and again that we have to draw the voucher number and the ledger folio number as well with that amount. Right? Now, third transaction, goods purchased from Ganesh. This is the credit transaction, we will not record it. Goods purchased from Lakshmi in cash. आपके कैश पे परचेजेस किए अगेन 15 मार्च बाय परचेजेस 50,000 पेमेंट, राइट. गुड सोल्ड. अब जब सेल्स हो रही है तो बट कैश कम्स इन, कैश गोज आउट. सेल करते तो कैश आएगी या जाएगी? बिजनेस में आएगी, यस. तो गुड सोल्ड फॉर 25,000. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश बुक की डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, दैट विल बी 25,000 18 March. Goods sold to Saraswati
Again credit transaction, we will not record this transaction. March 25 goods sold to Dev in cash. देव को कैश में सेल्स की है. अगेन March 25 to sales account 15,000. Received from Saraswati. Receipt side received to Saraswati 30,000. Paid salary to office clerk. By salary account 10,000. सारी पेमेंट क्रेडिट साइड है. Paid office rent 5,000. By office rent account 5,000 with date. Now after 31st March there is no other transaction. What we will do? We will do the total of the both sides. When I am doing the total of the debit side, it's 1,52,000. When I am doing the total of the credit side, 20 and 50, 70, 80. This is 85,000. It means debit side is exceed. अगर debit side exceed कर रही है, it means there will be the debit balance which will shown on the credit side. 1,52,000 minus 85,000. Your balancing figure will be 67,000. At the end of the month, that will be on 31st March. By balance carried down 67,000, and the total of the both side will be 1,52,000, 1,52,000. जो 1 मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस. यस, वेरी गुड. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन को आप क्या कर दोगे? ऑन नेक्स्ट मंथ. मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा? अप्रैल. ऑन 1st April टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,000. गॉट माय पॉइंट? आई एम अगेन टेलिंग यू कि जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ सप्लायर का नेम मेंशन होता है, कैश मेंशन नहीं है, दोज आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैश बुक में कोई प्लेस नहीं है. कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है प्लस, और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है जो आपसे पैसा गोज आउट हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है. दोनों साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को फाइंड आउट करोगे. राइट? वेरी सिंपल. एंड द इनिशियल क्वेश्चन विद द सिंगल कॉलम ऑन कैश बुक टू सॉल्व विद द वन सिंगल कॉलम कैश बुक. ओनली कैश अकाउंट हमने कैश अमाउंट कॉलम को डील किया है, सिंगल कॉलम ऑन कैश बुक. If there is any query on any step, kindly let me know. So we have covered the first step of the numerical with the single column. After this numerical, we will cover double column on cash book. Okay, beta? Note down the statement as well as the numerical on the notebook. Then we have to practice the single column on cash book from the NCERT as well as from the DK Goel book. If there is any query related to the single column on cash book, kindly let me know. Okay, बच्चे? Note down this. After this, we will start double column cash book. Hurry up, बच्चा. बच्चे, now we will discuss two column on cash book. As I already told you in your syllabus, there is a simple column cash book with bank column and petty cash book. Now we are going to discuss double column on cash book, that is a 2 column on cash book. Read this statement very carefully. Prepare the 2 column on cash book from the following information. June 1, cash in hand 2,800. June 1, cash at bank 7,000. June 10, discounted a bill of exchange at 1% through bank 5,000. June 15, cash sales 6,000. June 18, paid into bank 3,000. Paid into का मतलब होता है बच्चे deposited into bank. June 20, paid rent 700. June 25, bank charges 100. June 30, withdrawn from bank for personal use 1,500. June 30, purchase goods on credit from Vinay 4,000. As I already told you in the cash book, there is no place for the credit transaction. Right? Now we will discuss this numerical with step by step. Right? Yes, begin. Now we are going to discuss double column on cash book. Prepare 2 column on cash book. June 1, cash in hand 2,800. June 1, cash at bank 7,000. June 10, discounted a bill of exchange at 1% through the bank. 5,000 का 1% 50 रुपीज बैंक को दिए. 5,000 माइनस 50 रुपीज का डिस्काउंट बैंक ने हमें 4950 बैंक बैलेंस में दे दिए. राइट?
cash sales 6,000, paid into bank means deposited into bank. जब आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब एक ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश दोनों इफेक्टेड होती है, मींस दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री को आप बेटे किससे डिनोट करते हो? सी से. विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट की ट्रांजेक्शन एज यू नो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैश बुक. अब ये आपके जून 1 डेट को बैलेंस है, मींस दीज आर द ओपनिंग बैलेंस. जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश 2800, बैंक 7000. डिस्काउंटेड ए बिल 1% थ्रू बैंक, टू BR 5000 का 1% 50 रुपीज, 4950 बैंक कॉलम में. कैश सेल्स टू सेल्स 6000 कैश कॉलम में. पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में 3000, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में 3000. सी मींस कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक डेबिट है तो नेम आएगा टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है तो बाय बैंक अकाउंट. जून 18. पेड रेंट, बाय रेंट 700 कैश कॉलम में. बैंक चार्जेस ऑटोमेटिकली बैंक से भी होंगे, बाय बैंक चार्जेस 100 पेमेंट है. विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाय ड्रॉइंग्स 1500 बैंक अकाउंट्स. अब मैंने सबसे पहले कैश कॉलम का टोटल किया 6000 and 2800, दैट इज 8800, और इधर क्रेडिट साइड में 5100 प्लस 700 प्लस 3000, 5100 प्लस 700 5800, 5800 प्लस 3000 3000 प्लस 700 3700, 88 में से 3700 दिए, देन बैलेंस कैरी डाउन इज 5100. इस साइड का टोटल है 8800 और यहाँ पर आपका टोटल है 3700. 5100 is your balancing figure at the end of the month. Now total of bank column debit side 7000, 4950, 3000, 14950 less 1600. Balancing figure 13350 at the end of the month. जून के बाद मुझे क्या आएगा? जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये जो कैरी डाउन बैलेंस है बेटे, इसको आप ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर लीव कर दोगे, छोड़ दोगे. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट वन. दिस इज अ डबल कॉलम कैश बुक विद द कैश एंड द बैंक कॉलम, एंड वी डिस्कस्ड हियर द कॉन्ट्रा एंट्री एज वेल. नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल, do the solvers part of this numerical. If there is any query for the double column cash book, kindly let me know. You have to practice each and every numerical of NCERT and DK Goyal for the cash book, right? Note on this on your notebook. After this, our next step will be petty cash book. Hurry up, bachche.